Hello everyone, welcome to Lex Simplified. Today we are going to discuss the topic of agency, that is contract of agency under Indian Contract Act 1872. Now, the points that we are going to discuss in today's video are going to be definition of agency, what are the essential requirements which on fulfillment only will lead to contract of agency, and what are the modes in which you can create the agency. अब जब हम बात करते हैं एजेंसी के बारे में, आई वॉन्ट यू टू टेक अ लिटिल पॉज एंड थिंक, क्या आपने ये टर्म अपने डे टू डे लाइफ में कभी सुनी हुई है? हम इसके लीगल कॉन्टेक्स्ट की और लीगल पर्सपेक्टिव के बारे में तो बात करेंगे, बट क्या आपने ये शब्द कभी अपने डे टू डे लाइफ में कभी यूज किया है? और अगर किया है तो कौन से कामों के लिए? अगर आप मुझे पूछे तो दो तीन जगह जहां मैंने एजेंट का नाम सुना है वो है इंश्योरेंस एजेंट, IRCTC टिकट एजेंट, and the only work that I see them doing is doing work for me so that I don't have to go to the office and get the work done, and just in a way simplifying the job for me. But they might also be representing the organization so that the organization does not have to reach so many people at once, and the agents can reach and get the job done. Now, the food for thought here is, अगर इंश्योरेंस एजेंट है तो वो क्या कंपनी का एजेंट है जो आपका काम कर रहा है, या वो आपका एजेंट है जो कंपनी का काम कर दे रहा है आपके लिए? सोचिए, और अगर आपको आंसर मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। If you try to see, a lot of legal words have their base, which is a Latin term or Latin maxim. Here also there is a beautiful Latin maxim which sums up the entire concept of agency in a very precise manner. So it is quae fecit per alium fecit per se, which means he who wants to act or who acts through another does the act himself. जो काम दूसरों के माध्यम से एक पर्सन करता है, उसका मतलब यही है, उसे वैसे ही समझा जाए या इंटरप्रेट किया जाए जैसे कि उसने खुद ने वो काम किया है। ठीक है, दैट बीइंग द लैटिन मैक्सिम। अब जब मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी है वो डेल्ट है आपके चैप्टर 8 में, जो एजेंसी को डेडिकेटेड है, और वो सारे सेक्शंस कौन से हैं? तो 182 से लेके 238 तक। अब इसमें ना ही खाली आपको डिफाइन किया होगा व्हाट इज एजेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल, बट ऑल्सो कि क्रिएट कैसे हो सकती है एजेंसी, टर्मिनेट कैसे हो सकती है, एजेंट के कौन कौन से ड्यूटीज या राइट्स होंगे, प्रिंसिपल के कौन कौन से ड्यूटीज या राइट्स होंगे। पर हमारे इस वीडियो में जो हमने पहले 3 पॉइंट्स देखे, हम वही डिस्कस करने वाले हैं। नाउ, अगर आप एक्ट को ध्यान से देखें और ये जो सेक्शंस यहाँ पर मेंशन है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो आप जान पाएंगे कि एजेंसी का जो रिलेशनशिप है या कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली एक्ट में डिफाइंड नहीं है। वो मुझे बताता है, या एक्ट मुझे बताती है कि एजेंट कौन है। अगर वो ये सारे काम कर रहा है तो वो एजेंट है, अगर ये सारे काम करवा रहा है तो वो प्रिंसिपल है। बट उनके बीच का जो रिलेशन है, जो है एजेंसी, वो क्या है, वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 182 के ऊपर, जहां पर आपका एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड है। ठीक है, इसे हम एक साथ पढ़ेंगे और इसे थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए समझना कि ये सेक्शन आखिर में बोलना क्या चाहता है। एन एजेंट is a person employed to do any act. So first of all, he is a person who is employed. Okay. An agent is a person employed to do any act for another. Two parties, at least two parties, agent, okay, and another. Who is the another? Let's see. Or to represent any other in dealings with third person. The person for whom such, the person for whom such act is done or who is represented is called the principal.
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि दो काम है। एक तो या मैं एजेंट का काम कर रहा हूं या कर रही हूँ, और दूसरा कि भाई मैं या काम नहीं कर रही हूं तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी, राइट। अब जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वेरी सिंपल, जो काम मुझसे करवा रहा है या जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इज द प्रिंसिपल। अब many a times a question being asked, how many parties are there in contract of agency? Maximum 3, but always no. If someone is appointing an agent to do a task which not necessarily involves the third party interaction, there only has to be two parties, right? One being the principal and the other being the agent. However, yes, the maximum number of parties should always be up to 3. That is agent, principal, and third party, right? Okay, so this is the slide that gave a guest appearance a while ago. So the second point being, what are the essentials of the contract of agency? तो अगर आप ध्यान से समझे और अगर आपको याद हो कि ये कॉन्सेप्ट हम कौन से सब्जेक्ट के अंदर डील कर रहे हैं, तो मोस्टली ये डील किया जाता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो ओनली रीजन बीइंग कि आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के अलावा भी देयर आर वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, वेदर इट बी इंडेमनिटी, वेदर इट बी गारंटी, और वेदर इट बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, right? So here also, when I talk about what are the essential of agents, the contract of agency, it doesn't take away the general principles of contract. That has to be fulfilled. That is the first requisite, right? But apart from that, any other, essentials, yes. Which are those? We are coming to that. However, for you to know where you could find the answer to all the essential of valid contracts, your section 10 of Indian Contract Act 1872 very nicely defined as to what are the things one has to follow to make sure that he is or they are entering into a valid contract. First of them being, it has to be a legal object, right? There has to be an intention to enter into a legal relationship. It has to be based on free consent. The consideration has to be there, right? All of those. Now, coming to what is very specific to contract of agency. First of all, being competency of principle. Okay. The third being competency of agent, and the next being consideration. What is the competency of agent? What is the competency of principal? And what consideration are you talking about? Is something which is dealt in subsequent sections and subsequent to your section 182. अब जब मैं कंपिटेंसी की बात करती हूँ, सिंपली कि जो मेरे रिक्विजिट्स हैं, जो मुझे बोला गया है कि प्रिंसिपल कि ये एलिजिबिलिटी या ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए. दैट इज इफ ही if he qualifies that, he is eligible, and thus one of the essentials is fulfilled, right? अब who may employ an agent? Your section 183. अब मुझे पॉज करके बताइए, आप थोड़ा सोच लीजिए, और मैं तो एनी विच वे इवेंचुअली बता ही दूंगी कि ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है. Who may employ an agent? तो क्या मैं एजेंट के बारे में बात कर रही हूँ या किसके बारे में बात कर रही हूँ? बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल के बारे में. ठीक है, प्रिंसिपल की ऐसे कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो वो फुलफिल करने ही चाहिए, तभी जाके वो एक एजेंट को एम्प्लॉय कर पाएगा. ठीक है, any person who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent. अच्छा, अब जब कभी भी बात आती है कि मेजॉरिटी क्या होती है, 18 years. If it is not specified in any of the other act in which the person is subject to, then 18 years. However, if any specific law tells you what is the age, that is the age of majority. ठीक है, तो अगर कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट में या कोई एक्ट में जिसके अंडर आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या अगर उसमें डिफाइंड है, तो वो एज, अदरवाइज 18 years. ठीक है, so that being who can be the principal. First of all, majority उसकी हो चुकी होनी चाहिए एज की. That means he should be major and of sound mind.
right? Because ultimately he will be liable for the action. He will be accountable, responsible for the act of the agent. And if he is being represented by the agent to the third party, ultimate responsibility will be of principal. So it is very essential that he has to be of sound mind and who would have attained majority, can employ an agent. Now, going forward, 184, who may be an agent? मतलब एजेंट कौन बन सकता है? जहां पर भी आपको लॉ समझ ना आए, ट्रांसलेट करके आप जो भी लैंग्वेज में आपका ग्रिप है या आपकी मदर टंग है, अगर हो सकता है उसमें ट्रांसलेट करिए. आई थिंक इट विल गिव अवे दी यू नो मीनिंग टू यू इन दैट. हु मे बी एन एजेंट, कौन एजेंट बन सकता है? एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज or third person, any person may become an agent, but no person who is not of the age of majority and of sound mind can become an agent so as to be responsible to his agent according to the provisions in behalf herein contained. तो क्या मेरा एजेंट अनसाउंड माइंड का या एक छोटा बच्चा जो मेजर नहीं है वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर इन कंडीशन और इन सिचुएशन वेयर ही इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल to the principal for the act? No. Right? Consideration जरूरी नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है 185 के अंदर that no consideration is necessary to create an agency. Now I have one very quick question to ask कि अगर consideration जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं मतलब प्रिंसिपल को देना जरूरी नहीं, राइट? कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन कर रहा है वो एजेंट या प्रिंसिपल एजेंट के साथ और द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, उसे पैसे देना जरूरी नहीं क्योंकि कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी. नाउ द क्वेश्चन बीइंग, डज इट टेक अवे द राइट फ्रॉम द एजेंट टू आस्क द वेल डिजर्व्ड अमाउंट दैट ही should get for the work that he's done? If you want me to repeat, I can. If consideration is not necessary, does it mean that the agent does not have the right to seek, ask, or demand the amount that he is entitled to for the work he's done? Think of it and share the answer in the comment section. Okay, now if we move further with the provisions, 186 says agent's authority may be expressed or implied. The authority of an agent may be expressed or implied. But expressed or implied hota kya hai? Which is further then divided in your section 187. Definitions of expressed and implied authority. An authority is said to be expressed when it is given by words, spoken or written. An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case, and things spoken or written or the ordinary course of dealing may be accounted circumstances of the case. इतना लंबा पढ़ दिया, इसका मतलब क्या होता है? तो जब मैं, for example, if I am the principal, okay, now when I employ a person and I specifically give it in writing that Mr. X, I am hiring you as my employee, as an agent to do this task, and to complete the task you will have XYZ authority, right? Now I could verbally say it, or I can transfer my rights, whatever necessary rights are to be given. I transfer my rights through power of attorney. So whenever anything expresses to be, when the rights or the authority is to be transferred in written format, it is generally through power of attorney. So when I do that, it is expressed. Why? Because I am letting the person know, being the principal, के भाई मैंने तुम्हें हायर किया है, तुम्हें एम्प्लॉय किया है ये वाले काम को मेरे बिहाफ पर करने के लिए. That is expressed. When it comes to implied, by my actions or my words, or otherwise if someone is doing and me not stopping, right?
If I'm allowing someone to do things on my behalf or represent me in front of the third party and I'm okay, it is implied that he is my agent, right? For example, अगर मैं मान लो मैं कलकत्ता जा रही हूँ, ठीक है, मेरा घर इंदौर में है, मैंने वो चाबी, मेरे घर की चाबी मैंने मेरे नेबर को दे दी, ठीक है। अब अगर घर में कोई पानी का नल चालू है, ही हैज द इम्प्लाइड अथॉरिटी, मैंने सिंबॉलिक उसको ट्रांसफर कर दिया है मेरे घर का, कि अगर कुछ भी हो, इफ यू नीड टू ओपन द हाउस, यू हैव द अथॉरिटी सिंस यू हैव द कीज, राइट? ही हैज द इम्प्लाइड अथॉरिटी, he has the implied authority to open my house, make sure that the tap is then turned off, and then my house is all okay, right? That is implied authority. Now coming ahead, actually rather going ahead, 188. So in the previous sections, we saw what was implied authority, we saw what was expressed authority, and we understood it by examples. Moving ahead, what is the extent of agent's authority? किस type के actions हैं being an agent I can take or I cannot take? What is that limit? Who decides that limit? Okay. An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary to do in order to do such act. Okay. An agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in course of conducting such business. हाँ, मैंने जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल समझा है, मैं उसी से समझा रही हूँ। मैंने घर की चाबी दे दी मेरे नेबर को। अब मैंने उसको बोला घर का ध्यान रखना, ठीक है, और टैप चालू है। नाउ टू इंश्योर कि घर का ध्यान रखने में घर पूरा पानी में ना बह जाए, द पर्सन हैज टू ओपन द डोर, द पर्सन हैज टू अनलॉक, ओपन and turn the tap off. Those are allied actions. I never mentioned कि पानी का नल चालू होगा तो दरवाजा खोलना, बंद करना, and you are agent for that. No, me giving the key symbolically says you have to take care of the house. Now, whether it is the water overflowing or the gas switch on, the person has to make sure that my house is safe. And when I come back, it is actually a house, nothing burnt into ashes or, flown into some tap water, right? Going ahead, 189 says agent's authority in emergency. कुछ इमरजेंसी आ गई तो एजेंट क्या करेगा, ठीक है? An agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. वापस वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर वो घर मेरा ना होके उनका खुद का होता और नल चालू होता तो पूरे घर को पानी में बहने देते? नहीं, राइट? वो खड़े होकर नल बंद करते। That was an emergency case. I wanted him to take note of it and work accordingly. That if that was an emergency, he should, the neighbor who is now the agent should act in a way कि वो घर उसका है। अगर उसके घर में नल चालू होता वो कैसे एक्ट करता? ताला खोल के वो बंद करता ना, तो मेरे घर में भी उसे बंद करना है, ठीक है? ओके, तो इंपॉर्टेंट केस लॉज यहाँ बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग लूनकरण सोहनलाल वर्सेस जॉन एंड कंपनी, व्हिच इज AIR 1967, ऑल दैट इज ALL, इलाहाबाद का केस है, 308, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ कि जो लूनकरण सोहनलाल है उसने जॉन एंड कंपनी से यान ऑर्डर किया, ठीक है? आई थिंक 152 बेल यान ऑर्डर किया और जॉन एंड कंपनी ने अपनी एजेंट को बोला कि तुम डिलीवर कर दो। अब एजेंट ने डिलीवर नहीं किया। सो मिस्टर लूनकरण सोहनलाल, he went on to suing the company and said that my product is not delivered, I am the agent of the government and it is not delivered.
After seeing all of that, the interpretation of the term agent was said, and that and said that it will vary from case to case. Just because you're doing the work, and you might have, you know, you might be doing it, and you might then have to transfer it to someone else. For example, he was buying the yarn, and he had to give it to government of India, government of Assam. That does not necessarily mean he was Assam government's agent, right? Because he spent the money from his pocket. It was in his own account, right? It was not on government's of Assam government's account. It was in his own name, right? So every time that you say I have a relationship of agency involved, just because you are mentioning it as an agency does not mean it turns out to be a concept of agency per se, right? P. Krishna Bhatta versus Mundila Ganapati Bhatta. Here also some Benami Zameen ka transaction tha. Or the beautiful interpretation given said, when we talk about agency, it has to be in representative and derivative authority. Beautifully said. You should read the case. I'm just giving you brief of what was held. I will link the cases, soft copy in the pinned comment. And I would really, really, really appreciate if you could go through it and read through what I'm mentioning and check and let me know if it is correct or not. Okay. Then the third case being Chairman LIC versus Rajiv Kumar Bhaskar. अगर आप थोड़ी देर पहले का पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे याद करें, आई थिंक सेकंड या थर्ड स्लाइड होगी, कि अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट बोलूं तो एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी डूइंग योर वर्क, और आई बीइंग योर एजेंट डूइंग योर वर्क विच इज रिलेटेड टू द कंपनी. ये सेम क्वेश्चन आया था इस केस के अंदर. क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयर था, एक कंपनी का एम्प्लॉयर था मान लो, ठीक है. अभी उसने क्या किया कि बोला एम्प्लॉय को कि तुम्हारे मंथली सैलरी में से मैं एक पोर्शन अमाउंट निकाल कर, एक पॉलिसी है जो LIC के पास है, मैं वहां से मैं हर महीने प्रीमियम देता जाऊंगा. एम्प्लॉय सेड ओके. एंड once the employee died, the heirs got to know that the employer never submitted any amount, he never deposited any amount with LIC. Now the question being, agar employer ne jama nahi kiya, can I hold LIC accountable for it, right? After all the discussion, the point that was discussed here, that the employer did not have any route to reach out to LIC, right? Except for reaching through the employer. Employer not submitting the amount in a way affected the employee. Thus, the employer will be considered as an agent of LIC, and thus LIC will be liable. Okay, and previously I was taking one of the sessions, and one of the students asked, "Ma'am, here you are saying that whether principal is liable or not. Have you come across any case whereby the agent is liable?" I did not have the answer then, but I'll really appreciate if you all research and let me know if you come across any case whereby the agent is actually held liable. Yeah. Moving on. Okay. यहाँ पर क्योंकि ये मैंने नया देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ. AIR, that is All India Reporter, 1995 का केस है, मद्रास हाई कोर्ट का. तो ये हमें पता है, AIR, AL and MAD. ACJ is Accident Claims Journal. Okay, so in case if you were not aware, I'm informing you. Okay, अब हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी की. अब जब कोई भी ट्रांजैक्शन जब क्रिएट होता है तो एक पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होता है, और दूसरा पॉइंट होता है जहां पर वो खत्म होता है. Either naturally because the transaction comes to an end, or because of many other reasons. Right now we are discussing why, how it is created, which are the ways in which it will be created. First of all being express contract. थोड़ी देर पहले जो मैंने समझाया कि if I am expressly telling a person, either in written format or in verbal format, I am employing you for this task,
You will have to do it on my behalf. It is express contract of agency. Okay? If it is in written format, most of the times it is known as power of attorney. Moving on, by implied contract. नल वाला एग्जाम्पल कि जब circumstances की वजह से by act of people, the way they act or the way they choose not to act, right? If it is implied that you are the agent, you have to take all the steps, and it is not necessarily written because it is implied through circumstances of the case and the action. Agency by estoppel and agency by holding out. थोड़े बहुत सिमिलर है, क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ. जब हम बात करते हैं एजेंसी ऑफ एस्टॉपल की, तो मैंने अभी बोला कि बाय ईदर एक्टिंग और बाय चूजिंग नॉट टू एक्ट. तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर एजेंट रिप्रेजेंट करता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इनका एजेंट हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल है और आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा. ही इज रिप्रेजेंटिंग थर्ड पार्टी, द प्रिंसिपल इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी. Now, principal chooses to shut his mouth and not explain that no, he's not my agent. Do not come in his conversation. Do not fall for it. He maintains his calm and he maintains the silence. In that case, when the third party believing that agent is of a specific principle and thus enters into the contract, the principal later cannot bring up the fact that no, I never told that he is not my agent, right? He's estopped. Now this is actually a principle of promissory, doctrine of promissory estoppel. Promissory estoppel is the term. It is actually dealt under Indian Evidence Act, right? And that is the concept we are applying here. So if you are showing that you are the principal and he is your agent, later you can't back out. The agency by holding out. The only difference is here there has to be some positive act by the principal. What does this mean? कि मान लो एक छोटा बच्चा है जो शॉपकीपर के वहां जाता है और बोलता है, सर अंकल मुझे चॉकलेट दे दो, पैसे आप ले लेना मेरे मम्मी पापा से. आई डोंट नो अगर आपके वहां खाते चलते थे, हमारे वहां पे अकाउंट्स चलते थे कि एवरी फर्स्ट को पेरेंट्स यूज टू क्लियर दी अकाउंट्स, राइट? चिप्स हो, चॉकलेट्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, जो भी ले लो, एवरी मंथ अकाउंट क्लियर होता है. उसी का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि शॉपकीपर को बोलते कि भाई मुझे ये जो भी फूड आइटम है मुझे दे दो, मम्मी पापा से पैसे ले लेना. पहली बार जब फूड आइटम लिया, मम्मी पापा ने पैसे दे दिया. नेक्स्ट टाइम दिस लिटिल किडो अगेन शोज अप एंड द शॉपकीपर एंड्स अप गिविंग अंडर द अजम्पशन कि पैसे मम्मी पापा से मिल जाएंगे. अब मम्मी पापा कैन नॉट से कि हमने कहाँ उसे बोला था चिप्स लेने के लिए, आपने दिया ही क्यों? नहीं, आपने पहले पैसे दिए थे. दैट मेड द शॉपकीपर reach the conclusion, reach the resultant idea कि आप पैसे दोगे, आपने पहले दिए इसीलिए उनको विचारा है. So there is a positive act of giving the money which leads to shopkeeper believing कि अगर ये बच्चा वापस अगर मेरे से कुछ लेने आएगा, मुझे खाली अकाउंट्स में ऐड करना है. नेक्स्ट टाइम द parents come, I just have to settle the accounts and ask for money. ठीक है? By ratification. रैटिफिकेशन में जब एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके या जो अथॉरिटी उसके पास है ही नहीं वो यूज करके कुछ काम करता है फॉर प्रिंसिपल एंड विदाउट प्रिंसिपल्स नॉलेज, ठीक है, which later principal said no, it is okay, whatever transaction is done, it is okay, we will take the hit, whatever it is, the positive negative will be okay. The principal is agreeing and giving a nod to the entire transaction after agent who has worked upon it, right? And of course he has a right to say no, that he'll not ratify. This is not the not the action you take because since you're exceeding the authority. However, if he ratifies, first of all it has to be with full knowledge, right? There are certain essentials. If you all want, I can deal it in detail. However, suffices to say here, because we are discussing everything in brief, that if the act is done
Now the agent is either exceeding or utilizing the authority which he never had. In that case, when principal says, okay, no worries, I agree to the entire transaction. Now this will then be taken as if the agent had the authority from the very beginning. By necessity. By necessity भी आप वो जो हमने इमरजेंसी वाला एग्जाम्पल लिया उसी से समझ सकते हो. However, I am giving you another example. तो एक बार क्या हुआ, एक हॉर्स को ट्रेन से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर किया जा रहा था. अब वो हॉर्स स्टेशन पर तो उतर गया, पर जिनके पास द पर्सन टू होम द हॉर्स वाज टू बी डिलीवर्ड, ही टुक अ डे और टू टू कम. अब हॉर्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम अलग से ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते. सो स्टेशन मास्टर टुक केयर ऑफ द हॉर्स. नाउ वाज इट बाय यू नो by authority? No, it was by necessity. He had to feed all the thing, whatever was required. He had to offer the water to horse. Why? Because it was necessity. You can't let the horse die, right? Had it been your horse, would you let it die? No, right? So that is an example. Okay. So I hope you all had a great time understanding the concept, and with bit of some research questions and curious questions in the middle of the video. In case if you find answer to any of those, I would highly appreciate and encourage you to put it under the comment section, and do not forget to see the pinned comment, since I will share the soft copy of the cases there. Thank you so much. Bye bye.